ताकि समझ। ओके, समटाइम्स अब क्या होता है कि हम फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओरिजिनल फंक्शन अगर मेरे पास एफ एक्स है विच आई एम कॉलिंग द ओरिजिनल फंक्शन, I'll transform this function from, उसके लिए हमें समझना पड़ता है, first we need to understand what operations are we doing in the function. जब हम वो समझते हैं, only then we are able to understand that how our function is transforming. There are total 6 operations. उसके बाद मैं I'll try to help you understand कि किस तरीके से इसको हमें if fx is the original function and if I make a new function gx which is f of x plus 2. Now what has happened? Input or output के हिसाब से समझना है. What is the operation? You understand the operation, only then will you be able to understand what is the operation. ऑपरेशन क्या हो रहा है? ऑपरेशन समझोगे तो बात समझ आएगी. 2 added to the output. Is that right? सही है. So whenever this is happening, 2 is being added, तो हम कहेंगे अब now what is the transformation? इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन बाय मैट्रिक्स लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में टू मेक आवरसेल्व्स मोर कंफर्टेबल. ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन बाय 0 and 2. सही है. इसी तरीके से इफ आई एम राइटिंग अनदर फंक्शन एच एक्स और उसमें मैं कह रहा हूँ 3 times f of x. अब ऑपरेशन क्या हुआ है मेरे पास? What has happened to my original function? क्या कौन what multiplied by 3? Output multiplied by 3. All outputs multiplied by 3. Outputs क्या होते हैं? Values of y. तो वो सब 3 से मल्टीप्लाई हो गए तो जो whatever was positive became more positive, whatever was negative became more negative. So what is the transformation for this one? आधी बात है बेटे ये. तो हम लिखते हैं it is a vertical stretch by a factor. और remember इसमें your x-axis is the invariant line. If anything is on the x-axis, that will be the only thing that remains on the x-axis. And every other point will move somewhere. Every other point but the x-axis. सही है. इसी तरह if I write another function here, g of x is minus f of x. So what is the operation? Output multiplied by -1. Is that right? So what is the transformation for this one? अब हर चीज अब वर्टिकल 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 कह रहे होते हैं तो इसको भी वी कॉल इट वर्टिकल फ्लिप फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. नाउ विजुअलाइज समथिंग इज फ्लिपिंग वर्टिकली ऑन द ग्राफ वेयर इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड. कहां रिफ्लेक्ट होगी? नीचे की तरफ. नीचे है तो व्हाट इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन? तो वी विल कॉल इट रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस. हम अपने समझने के लिए इसको vertical flip कहते हैं because if any operation is being done on the output, the resulting transformation will be vertical. Whatever the operation is, the same transformation will be seen. Whatever the sequence of operation is, the same sequence of transformation will be followed. Is this clear or not? इसी तरीके से if I write another function gx is fx plus 2 या -5, then what? What is the operation? Five subtracted from the input. What is the transformation for this?
Translation is horizontal. 50. Horizontal में सारी चीजें उल्टी होती हैं. If I'm subtracting something from the input, my entire graph will go आगे right चला जाता है. इसकी detailed video देख सकते हो. अभी we are just going through the entire thing for the sake of workshop. So -5 अगर input में हो रहा है तो translation +5 होगी. Similarly अगर +2 हो रहा होता तो translation -2 होती horizontal. Is this clear? Horizontal में हर चीज उल्टी होगी. सही है. इसी तरीके से if I write gx, another function which is f of 3x. Now what is the operation? Very good. The moment you realize it, आपका काम आसान हो जाता है. Input multiplied by 3. So what is the transformation? Horizontal stretch by a factor. Yes. 1/3. ऐसे के लिए दोबारा तफसीली वो देख लेना. बस अभी शॉर्ट में भी फॉर द सेक ऑफ दिस वर्कशॉप अंडरस्टैंड दिस कि हमेशा इनपुट में और जो होता है उसका उल्टा ही होता है. व्हेन यू आर सबट्रैक्टिंग ऐड हो रहा था, व्हेन यू आर एडिंग सबट्रैक्ट हो रहा था, व्हेन यू मल्टीप्लाई तो उसके रेसिप्रोकल से. इफ यू वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 1/3 तो 3 से स्ट्रेच होता है. दिस क्लियर. डिवाइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लाते. इफ इट इज डिवाइडिंग बाय 3 हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/3. इज दिस क्लियर. And the third and the last one is मैं अगर लिख लूं hx is f of -x. ऑपरेशन क्या हो रहा है? Very good. Input multiplied by -1. So what is the transformation? Horizontal flip या हम कहते हैं for our sake reflection in the y. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. Yes, flip होता है. Every point is reflected. Every individual point is reflected. The line of reflection हमने बता दी, that is the only invariant line. Y-axis is the invariant line in this case. Is this clear or not? सही है. So this is how function transformation work. इसके कुछ basic सवाल देख लेते हैं. अगर मैं कहूँ g of x is 2 times f of x plus 3. Okay, now can you tell me what transformation from f to g? Can you tell me how did the graph transform from f to g? Transformation बताओ. For your understanding, I urge you to understand the operations. वो क्या रहे? Okay, first आपने output में 3 ऐड कर दिया. Okay. हाँ, so this is what you need to understand. Sequence of transformation is important then. पहले क्या किया है? Operations बताओ. Input तक किसी से multiply नहीं हो रहा. Yes, output multiplied by 2. Then very good. उसके बाद output में 3 added. बहुत जरूरी. यस. हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनके आपस में कोई भी ऑर्डर हो एक दूसरे को दे डू नॉट इंटरफेयर. बट इसमें इंपॉर्टेंट होगा. अब कैन यू टेल मी द ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर सीक्वेंस के साथ. व्हाट विल बी द फर्स्ट वन? उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हुआ था सेम उसी ऑर्डर में बताना है आपको. पहला क्या हुआ? आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 3. वर्टिकल स्ट्रेच by a factor 3. And what about the second one? Zero p. Clear है? Make sense? इसी तरह if I write hx is f of okay. Now what?
You need to be very clear with the operation. मेरा initial input was x. What did you do to x? Tell me the sequence of operation now. अब क्या किया input का? Very good. आप कह रहे हैं input multiplied by 3. Then very good, 1 subtracted from the input. So now can you tell me the transformations? Order भी उल्टा होगा. Input में you'll have to go in reverse order. तो पहले क्या होना चाहिए? Yes. Translation by 1 0. फिर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? कह रहे नहीं है. सीख कुछ ओरिजिनल फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो दोबारा देख लेना, उसमें सब समझाया मैंने ग्राफ के साथ. वी आर जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू इट ताकि हम रिव्यू कर लें, हर चीज को रिवाइज कर लें, समझ में आ सके. उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद द ग्राफ. हमें अपना इनपुट चेंज करना पड़ता है टू गेट द सेम आउटपुट. वो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा. इज दिस क्लियर? इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक और एच एक्स है which is original, remember original function सारे केसेस में f था, f को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. So please be very careful with the words that the question used. -2 f of x plus 5 minus 3. Okay, yes. अब मुझे इसमें डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बता सकते हो तो दैट विल बी वेरी गुड. वेरी गुड. सो -5 -3. ब्रिलियंट. क्लियर हो गया?